गोलाघाट के कमार गांव की युवती नम्रता बोरा की मौत को लेकर नए खुलासे हो रहे हैं। दिसपुर थाने में युवती के परिवार की ओर से एफआईआर दाखिल करने के बाद ही इस घटना ने एक नया मोड़ ले लिया है। पुलिस के छानबीन में जो तथ्य सामने आ रहे हैं उसके मुताबिक 3 तारीख की देर रात 1:30 बजे नम्रता के पास उसकी एक सहेली का फोन आया था, जिसके बाद नम्रता प्रज्ञा बरुआ, मृगांक बरुआ, गायत्री बरुआ और अन्नायातुल्ला वादूद के साथ शिलोंग चली गई थी। 4 तारीख को देर रात जब अपने 5 दोस्तों के साथ वह गुवाहाटी की ओर आ रही थी, उसी दौरान वह सड़क हादसे का शिकार हो गई और परिवार वालों को इस बारे में खबर मिली। अब इसी से जुड़ा नया वीडियो सामने आया है। वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि चालक के सीट पर एआईयूडीएफ विधायक के बेटे अन्नायातुल और उसके ठीक पीछे ही बैठी है नम्रता। तस्वीरें साफ तौर से ये बयान कर रहती है कि विधायक का बेटा ड्राइव कर रहा था। आरोप के मुताबिक घटना होने के बाद नम्रता को गंभीर अवस्था में छोड़ बाकी सारे दोस्त अन्नायातुल के साथ फरार हो गए, लेकिन उनमें से ही 2 दोस्त मृगांक और प्रज्ञा बोरा ने इंसानियत दिखाते हुए उसे नोंगपो चिकित्सालय में भर्ती कराया था, मगर तब तक नम्रता की मौत हो चुकी थी। वही नम्रता के पिता के मुताबिक यह कोई स्वाभाविक घटना नहीं है, क्योंकि अगर यह सड़क दुर्घटना थी तो उस दिन शिलोंग गए उसके साथियों में से बाकियों को एक खरोच भी नहीं आई। यह संदेहजनक है। नम्रता शिलोंग का हितका बाटते नंगपो नाমৰ ঠাইটুকুৰাত एक्सीडेंट हो डेथ হৈছে। সেইটো কোৱাৰ পিছতে ফোনটো তেওঁ কাটি দিছিলে। তাৰপিছত আকৌ মই ফোন কৰি ক'ত লোকেশ্যনটো বিচাৰিছিলোঁ বোলে নংপো থানা বুলি ক'লে। আমি গৈ নংপো থানা পালোগৈ। নংপো থানাত আমি গৈ উপস্থিত হ'লোঁ। উপস্থিত হোৱাৰ পিছত আমি যি দেখিলোঁ গোটেই ঘটনাটো কিছু ৰহস্য আবৃত্তত সোমাই আছে আৰু গোটেইটো এটা ৰহস্য গুণ পাইছোঁ। গতিকে ইতিমধ্যে আমি নংপো থানাত এফআইআৰ দিছোঁ। নংপো থানাই এনকুৱাৰী কৰিছে আৰু কালি মই দিছপুৰ থানাতো এখন এফআইআৰ দিছোঁ। সঠিক তদন্ত হৈ মই যাতে ন্যায় পাওঁ, মোৰ যাতে অকালতে হেৰাই যোৱা ছোৱালীজনী ন্যায় পায় আৰু এই ক্ষেত্ৰত অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাদেৱে যাতে উচিত তদন্ত প্ৰদান কৰিব পাৰে। গাড়ীখনৰ যিটো আমি দেখিছোঁ, এইটো গাড়ীখনত বাকীখিনি অকণো আঘাত পোৱা নাই, অকল নম্ৰতা ডেথ হৈ গৈছে। এইটো আচলতে কিবা ষড়যন্ত্ৰমূলকভাৱে তাইৰ মৃত্যুক সাৱটি ল'ব লগা হৈছে বুলি মোৰ ধাৰণা হৈছে। গতিকে গোটেই গ্ৰুপটোক এটা উচিত তদন্তৰ আওতালৈ আনি তেওঁলোকৰ ফোনবিলাক চব কি পৰিস্থিতিত তাইৰ ঘৰৰ পৰা ওলাই যাবলগীয়া হ'ল, কি পৰিস্থিতিত তাইৰ লগৰবোৰে তাইক লৈ গৈ কি অৱস্থাত পেলালেগে, এইটো উচিত তদন্ত কৰি ন্যায় দিয়ক। মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই যাতে মোক ন্যায় প্ৰদান কৰে, তেওঁৰ ওপৰত সম্পূৰ্ণ আস্থা ৰাখি। লগত কেইজন আছিলে মানে লগত তেওঁ 3জনী বান্ধৱী, তাইৰ সৈতে 3জনী আছিলে আৰু 2জন ল'ৰা আছিলে। সেইটোকে জানো। সিহঁতক মই যেতিয়া সুধিছিলোঁ, সিহঁতে যেতিয়া সম্পূৰ্ণ সুস্থ হৈ আছে, মই সুধিছিলোঁ যে তোমালোক ইমান সুস্থ কিন্তু মোৰ ছোৱালীজনী কেনেকৈ মৃত্যু হ'ল, তেওঁলোক নিমাতে আছে, তেওঁলোকে একো উত্তৰ দিয়া নাছিল। সম্পূৰ্ণ মোৰ ষড়যন্ত্ৰমূলক বুলি মই এটা ধাৰণা কৰিছোঁ। গতিকে সঠিক তদন্ত কৰি পুলিচক আমি যেতিয়া দিছোঁ, পুলিচ বিভাগে নিশ্চয় তদন্ত কৰিব। মই আৰু একো নকওঁ, ইয়াকে কৰিছোঁ। वहीं अब तक अन्नायातुल को भी पता नहीं है, कोई भी अता पता नहीं है। पुलिस ने मामले की जांच के लिए अन्नायातुल को पेश होने का आदेश दिया था, मगर अब तक बिलासीपाड़ा के एआईयूडीएफ विधायक हाफिज बशीर अहमद कासिम के बेटे की कोई खबर नहीं मिली है। मौका वारदात पर क्या हुआ था, इस पर अब भी सस्पेंस बरकरार है। सवाल यह भी उठ रहे हैं कि क्या सच में नम्रता की मौत एक प्राकृतिक घटना थी या इसके पीछे का कारण कुछ और ही है। नम्रता के परिवार वालों ने इस पर सटीक कार्रवाई की मांग की है। वहीं रुक्मिणी गांव के नेहा अपार्टमेंट के सिक्योरिटी गार्ड का कुछ और ही कहना है। उसके मुताबिक उस दिन अपने दोस्तों के साथ जाने से पहले नम्रता ने
मेडिकल जाने की बात कही थी। सुनते हैं उसी की जुबानी की आखिर क्या कहा था नम्रता ने। এটা 39 মোক ফোন কৰিছে বিমল দা গেটটো খুলি দিয়কচোন মই মেডিকেল পাওঁ নম্ৰতা তাৰপিছত মই ওলাই আহোঁতে আকৌ মানে লগে লগে অহা নাই তাই কেতিয়াবা কি কৰে এডভান্স আগতে ফোন কৰে মই গেট খুলি মই হাকা যে সেইকাৰণে ৰুমতে থাকোঁ তাৰপিছত ওলাই গেট খুলিব দৰ্জা খোলাতে আকৌ মিছ কল দিছে তাৰ আহি গেট খুলিলোঁ খুলি মোক কৈ গ'ল মই অলপ দেৰি নকৰিবা সোনকালে আহিবা কৈছে হ'ব বেছি টাইম নকৰোঁ মোৰ কালি ডিউটি আছে কোৰ্টতো যাব লাগিব এনেকৈ কৈ ওলাই গ'ল গৈ এইখিনি জেগাত ফোন কৰি আছে ফোনটো ধৰা নাই মই তেতিয়ালৈকে গেটটো লক কৰা নাই মই থিয় হৈ আছোঁ তাৰপিছত তাই আহিলে আহি মোৰ লগত কথা পাতিলে মই তেতিয়া গেটটো লক কৰিলোঁ কৰি তাই ফোন কৰি আছে তাৰপিছত মই গুচি গ'লোঁ এইপিনে মোক কৈছে মেডিকেলত যাম কিমান সময় সেই ঘটনাটো এতিয়া 1:40 মানে আগে পিছে ওলাই যোৱা নাই কেতিয়াবা ৰাতি আহে আৰু মানে কেতিয়াবা ওলাই গৈ লগৰ লগত ৰাতি 1 বজাত কেতিয়াবা দেৰিকৈ আহে এনেকুৱা আৰু অহাটো সোমোৱাটো সোমায় কিন্তু ওলোৱাটো নাই